Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, class 8th, subject science. I'm your teacher Mrs. Fozia, and today we will learn about types of chemical reactions from unit number 5, chemical reactions, from page number 70 to 71. Before starting, I will ask some questions. Number 1, if we burn wood, is mass lost during that process? Yes, if we burn wood, no mass is lost during that process because it obeys the law of conservation of mass, according to which no mass is created nor destroyed. What type of reaction occurs if any compound breaks? Yes, if any compound breaks, it is the type of decomposition reaction. Yes, students, after completing this topic, you will learn how chemical reactions occurs in different ways. How many types of chemical reactions are there? There are 5 types of chemical reactions. In this lecture, you will learn about 5 different types of chemical reactions. In your books, there are only 2 types are mentioned, but I will discuss here about 5 types. Number 1, synthesis. Number 2, decomposition. Number 3, single replacement. Number 4, double replacement. And number 5, combustion. First of all, we will discuss about synthesis. Synthesis, the word means to put things together to make a whole. In a synthesis reaction, 2 or more chemicals bond together forming one new substance. Synthesis का मतलब होता है to prepare something, to make. In this reaction, 2 or more chemicals bond. Bond means जुड़ जाना, ठीक है. Bond together, आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया substance बनाते हैं. जैसा कि आपको इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है, reactants plus reactant aromatic product, A plus B aromatic AB. 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाएगा इससे सिंथेसिस को. Synthesis reactions are easy to recognize. There will be 2 or more reactants but only one product. 2Na plus Cl 2 aromatic 2NaCl, 2H2 plus O2 aromatic 2H2O. डबल रिएक्टेंट्स हैं, सिंगल प्रोडक्ट है दोनों इक्वेशंस में. यानी इस तरह की इक्वेशंस हो तो इनको देख के हम फ़ौरन पहचान जाएंगे ये किस टाइप के रिएक्शंस हैं, सिंथेसिस के या कॉम्बिनेशन के, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट है जी डीकम्पोजिशन. इसके नाम से ही समझ आ जाती है, मीन्स टू सेपरेट और ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन वन सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स. इसमें एक सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होता है. ठीक है. तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डीकम्पोजिशन. यानी इसका मीनिंग ही यही है, ब्रेक डाउन और सेपरेट. जैसा कि आपको इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है, ब्रेकअप है रिएक्टेंट एरोमार्क प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट. ठीक है. रिएक्टेंट जो है वो 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है. तो जब आप इक्वेशन में 2 प्रोडक्ट्स देखें, इसका क्या मतलब है कि कौन सा रिएक्शन हुआ, कौन सी टाइप का, डीकम्पोजिशन. Decomposition reactions look for chemical equations which have only one reactant but 2 or more product. वाटर की एग्जांपल ली है, वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कर रहा है. वाटर का फार्मूला क्या है, H2O. 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 2H2O ब्रेक होके 2 हाइड्रोजन 2H2 बना रहे हैं और प्लस ऑक्सीजन O2 फॉर्म हो रहा है. तो ये वाटर की क्या हो रही है, डीकम्पोजिशन. इसके एलिमेंट्स में, यानी कंपाउंड की उसके अपने एलिमेंट्स में जो सेपरेशन होगी उसको डीकम्पोजिशन कहेंगे. सिंगल रिप्लेसमेंट आता है नेक्स्ट. इट इज़ द प्रोसेस इन विच वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड. कंपाउंड आपको पता है 2 एलिमेंट्स का कम्बिनेशन होता है. ठीक है. उनमें से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अगर रिप्लेस कर रहा है तो वो क्या है, सिंगल रिप्लेसमेंट. जिस तरह से AB प्लस एक्स एरोमार्क AX प्लस B. B की जगह X ने ले ली, X ने B को रिप्लेस कर दिया, उसने प्रोडक्ट क्या बनाई, AX, और प्लस B को उसने सेपरेट कर दिया उससे. ठीक है. इसको कहेंगे सिंगल रिप्लेसमेंट. Single replacement reactions have an element and a compound on both the reactant and product side of the equation. Zn plus 2HCl aromark ZnCl2 plus H2. HCl एक कंपाउंड है, Zn एक एलिमेंट है. Zn ने HCl में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह ले ली है और क्या बना दिया है, ZnCl2, और साथ में हाइड्रोजन सेपरेट हो गया है साइड प्रोडक्ट के तौर पे. नेक्स्ट आता है जी डबल डिस्प्लेसमेंट.
सिंगल में सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था, डबल में क्या होगा, डबल एलिमेंट्स डिस्प्लेस होंगे। अ कंपाउंड रिएक्ट्स विद अनदर कंपाउंड टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, पूरा एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से जब रिएक्शन कर रहा है तो नए दो कंपाउंड्स बन रहे हैं। इसका मतलब है दोनों कंपाउंड्स के दोनों दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो गए हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, डबल रिप्लेसमेंट, कि डबल एलिमेंट्स एक दूसरे से रिप्लेस हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे की जगह ली है। जैसे कि ए बी प्लस एक्स वाई है, ए बी में से बी रिप्लेस हो गया एक्स वाई के, वाई के साथ बी मिल गया, और इसका एक्स वाई का एक्स जो है वो ए के साथ, प्रोडक्ट क्या बनी, ए एक्स प्लस बी वाई, ए बी प्लस एक्स वाई एरो मार्क ए एक्स प्लस बी वाई। डबल एलिमेंट्स एक दूसरे से रिप्लेस हुए हैं। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस हैव टू कंपाउंड्स ऑन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। AgNO3 plus NaCl arrow mark AgCl plus NaNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, और फॉर्म किया इन्होंने सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। AgNO3 में से NO जो है वो NaCl के Na के साथ कंबाइन हुआ है, ठीक है, और NaCl का Cl जो है वो Ag के साथ कंबाइन हुआ है, इस तरह से डबल रिप्लेसमेंट हुई है। Combustion or burning is a chemical reaction between an organic compound, usually a hydrocarbon, and oxygen gas. The products in a combustion reaction are carbon dioxide and water. यानी combustion का हमें पता कैसे चलेगा कि अगर प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मौजूद हैं, इसका मतलब है वो रिएक्शन कौन सा हुआ है, कंबस्शन वाला। ठीक है, बर्निंग का प्रोसेस होता है ये। ठीक है, और होता किन में, ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंबस्शन का प्रोसेस होता है। कंबस्शन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है कि ये हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने अंदर से हीट रिलीज कर रहे हैं। एक्सो का मतलब है अपने एनवायरनमेंट को हीट दे रहे हैं। ठीक है, द जनरल फार्मूला फॉर अ कंबस्शन रिएक्शन इज CxHx प्लस O2 एरो मार्क CO2 प्लस H2O। अच्छा, जो रिएक्शंस होते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एक्सोथर्मिक जो कि अपने एनवायरनमेंट को हीट रिलीज कर रहे होते हैं, दूसरे होते हैं एंडोथर्मिक जो एनवायरनमेंट में से हीट ले रहे होते हैं, अपने लिए इनटेक कर रहे होते हैं। तो कंबस्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कंबस्शन रिएक्शंस ऑलवेज हैव ऑक्सीजन गैस एज अ रिएक्टेंट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज प्रोडक्ट। CH4 एक मीथेन गैस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH4, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इसमें मौजूद हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर इसने क्या बनाया, CO2 प्लस H2O। तो यानी इक्वेशन देख के भी आपको फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन हो रही है, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है, मींस कि ये कंबस्शन रिएक्शन। Combination, which is also known as synthesis, single replacement or single displacement, double replacement or double displacement, decomposition, and combustion. Now, not every reaction falls perfectly into one category. Sometimes a reaction falls under two categories, but there are some very key features of each of these categories. Let's start with combination reactions. Combination reactions combine two or more substances to form a new single substance. This example is elemental magnesium and oxygen combining to form magnesium oxide. The two elements combined and formed one ionic compound. Even though it made 2 units of magnesium oxide, they're the same substance. So here we have the balanced chemical equation, a particulate drawing of that same reaction, and now here's a general equation for combination reactions. A plus B yields substance AB. The reverse version of this kind of reaction is called decomposition. In this reaction, things fall apart instead of coming together. A single substance breaks down into 2 or more simpler products. Here's an example of hydrogen peroxide breaking down into water and oxygen. Usually, decomposition reactions need heat or fire or electricity to get started. This reaction can happen quickly with a catalyst like yeast or manganese dioxide. So we have the equation, a drawing, and now a simple formula for decomposition. AB yields A plus B. The resulting compounds are smaller and simpler than the starting compound. Let's look at the next type of reaction. Single replacement. In this reaction, one element replaces a second element in a compound. We'll use the example of zinc reacting with iron chloride to make zinc chloride and elemental iron. The two metals in this case have swapped places. So here we have an equation, a drawing, and now a simple formula for single replacement reactions. A plus BC yields AC plus B. But not all single replacement scenarios actually work. In order to see if the swap will occur, we need to reference a chart.
double replacement. This reaction is similar to single replacement, except we're starting with two compounds. The reaction has an exchange of positive ions between two compounds. In this example, copper 2 chloride and hydrosulfuric acid will swap their positive ions to make copper sulfide and hydrochloric acid. So here we have an equation, a drawing, and now a simple formula for single replacement reactions. AB plus CD yields AD plus CB. You can see from this equation that A and C have just switched places, and those represent the positive ions. Usually, a double replacement reaction creates one of three products: a precipitate, a molecular substance, or a gas. In this double replacement reaction, we started with two aqueous solutions and end with aqueous hydrochloric acid, but solid copper sulfate. This will sink or precipitate to the bottom of the container. Another possible product would be a molecule. In this example, we start with aqueous substances, but one of the products is a liquid, the water, and the other product is still aqueous. Lastly, another possible product from a double replacement reaction is a gas. Again, we start with an aqueous substance, sodium cyanide, sulfuric acid, but form a gas as a product, poisonous hydrogen cyanide gas. Don't try this one at home, folks. The last type of chemical reaction is a fun one, combustion. In combustion, an element or compound, typically a hydrocarbon, reacts with oxygen, often producing heat or light. So here's the combustion of a hydrocarbon called methane. The combustion with a hydrocarbon will always make water and carbon dioxide as products. This makes predicting the products really easy in this case. So here we have an equation, a drawing, and now a formula for the combustion of a hydrocarbon. Don't be intimidated. The x and y variables here provide a shortcut for balancing the equation as well. But not all combination reactions happen with hydrocarbons. The combustion of magnesium in oxygen is both a combustion reaction and a combination reaction. Remember, there are some reactions that can fit into more than one type of reaction.